Good afternoon, friends. Let us proceed ahead with the last few sums. I think there are no more sums to be solved other than this. So there is one sum to be solved. Okay. So let us first check up the homeworks, which were quite easy in my opinion. You also could have got it. But still, if you have any doubt, you should ask. Absolutely okay. Any concept on which you have doubt, you should ask. So, which was the homework question? P1. Okay. P1, one by one. Three homeworks. पास्ता कल के होमवर्क किया क्या पहले? सब कुछ किया. गुड. नहा के नहीं आया लेकिन नहा के भी आया. P1. वो काको किधर मर गया? हाँ? रुचि तूने होमवर्क किया क्या? अलग अलग किया ना? P1. Each problem separately. P1, P2, P3. Kuber Limited gives you following information: share capital, authorized, preference shares, equity shares. बाकी सब कुछ normal है. Company redeemed the preference shares. It is the same question as what we did yesterday. It also bought back 50 lakh shares of rupees 10 each at 50 per share. Wow, this is bloody. देखो 100 crores of on 10. So what were your total shares? 10 crore shares were there. No, not 10 crore. My mistake. 2.5 crore. क्योंकि 25 upon 10. Look at the exam. 25 upon 10 is 2.5 crore shares. 2.5 crore का 25% निकालो. 0.625 crores. That is 62 lakh 50,000 shares. उतने shares तुम buyback कर सकते हो at the most. अगर चाहोगे तो भी. Maximum buyback can be equal to that much. Do you understand? Company ने कितना buyback किया है? Company has done a buyback of 50 lakh shares. Do you understand? Payments are made out of the huge bank balance. Pass journal entries and prepare what? Balance sheet. It's a pretty easy question. There's nothing great in any part item there. Let me check up. You can ask any doubts, whatever you have. Absolutely no problem. Look at it. Bank account debit. Q4 again. Preference shares पहले redeem करने हैं हमें. हाँ है ना? Redeem करने तो पैसा payable दिखाना है. You have to cancel the share capital. Preference share capital account debit 75 crore. To preference shareholders account 75 crore because this is redeemed at par. Redeemed at par, am I right? Preference shareholders to bank 75 crore. Then you create a CRR. I think she has consumed Mati there. उसने CRR combine किया है क्या? Preference नहीं. For preference shares, CRR cannot be created out of securities premium. Because only for section 68 word free reserves includes securities premium. Preference shares are redeemed not under section 68. Preference shares are redeemed under section 55. 55 section does not cover securities premium as a part of free reserves. तो ये एंट्री गलत है. रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR 75. अच्छा उसने क्रेडिट किया है नहीं के? रेवेन्यू रिजर्व्स टू CRR. इंपॉर्टेंट फंडा लिखो. फॉर पर्पज ऑफ बायबैक. For purpose of buyback, free reserves include securities premium. For the purpose of buyback, free reserves
include securities premium. However, for redemption of preference shares, free reserves do not include securities premium. Free reserves do not include securities premium. Are you done? Clear on this? एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, अभी बायबैक का एंट्री. इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख शेयर्स इंटू 10, 5 करोड़ रुपीज इन करोड़ का एंट्री पास किया है. रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 20 करोड़. रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 25 करोड़. देन वी पे 25 crore. Now this CRR of 5 crores can be created out of securities premium. I will use securities premium here. If you remember yesterday ICS solution, they had used it. Security premium to CRR. This is CRR for buyback of shares. समझा क्या? तो बायबैक के लिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, रिडेम्पशन के लिए यूज. बैलेंस शीट देखो, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स देखो. इक्विटी शेयर कैपिटल 25 करोड़ था, 25 में से 5 गया, 20 रह गया. प्रेफरेंस शेयर्स कुछ रहेंगे नहीं ना. कैपिटल रिजर्व एज इट इज रहेगा, वो 15 का 15. सिक्योरिटी प्रीमियम 25 था, 25 में से ट्रांसफर टू सीआरआर इज 5. आउटर कॉलम इट विल बी 20. रेवेन्यू रिजर्व 260 था, ट्रांसफर टू सीआरआर 75 था. Am I right? Premium on buyback है? Premium on buyback can go out of securities premium, ra? अच्छा, उसने रेवेन्यू रिजर्व में से लिया है. Is security premium available? Yes. So I will use securities premium also here. Please remember, securities premium whenever available you should try to use, because it has restricted use. सिंपल एग्जाम्पल ले लो. आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसमें ब्रेड का पैकेट है, 2 पैकेट्स है. एक परसों का है, एक कल का है. आज आपको ब्रेड खाने का है, कौन सा ब्रेड पहले खाओगे? परसों का ब्रेड. रोटी खाओगे? मैंने बोला तुमको ब्रेड खाने का है. So you should try to use securities premium because it has a restricted use. Do you understand that? 5 plus 20. समझा क्या रे? To equity shareholder. तो यहां पर securities premium ये पूरा 0 आएगा. Entirely use. Transfer to CRR 5. Premium on buyback. Premium on buyback is 20. Outer column it will be 0 only. समझा क्या रे? और ये CRR को कितना गया? 75 चला गया रेवेन्यू रिजर्व्स. टेल मी द आंसर. 185 रहता है क्या? अच्छा, ठीक है. 185 नेट टोटल तो सेम ही रहेगा. CRR 80 का आ गया, 75 प्लस 5. Your total reserves are 280. Sir, they have asked to buy back through accumulated reserves. So shouldn't the CRR be through revenue reserves? No. What is done is correct. The reserves word for buyback includes securities premium. Because security premium is capital and buyback is also what? Repayment of capital. Logic क्या है? Why security premium is allowed for buyback? Buyback means what? Giving back the capital. Security premium is what? Capital only ना. जब मैं शेयर्स इश्यू करता हूं तो उसमें से कुछ पार्ट मैं फेस वैल्यू के लिए ट्रांसफर करता हूं, कुछ पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम को ट्रांसफर करता हूं, बट अल्टीमेटली इट इज अ कैपिटल ओनली ना.
आ जाओ ऊपर। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। बैलेंस शीट देखो, शेयर कैपिटल 20, रिजर्व्स एंड सरप्लस 280, करंट लायबिलिटीज विल रिमेन सेम एज अंडर existing 40, बैलेंस शीट टैलीज एट 340, असेट्स आर, अच्छा नॉन करंट असेट्स है ही नहीं क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 100, करंट असेट्स 240, अब बोलेंगे सर 240 कहां से है, नोट्स टू अकाउंट देखो, ओपनिंग बैलेंस 340 था, रिडेम्पशन के लिए 75 चला गया, बायबैक के लिए 25 चला गया, 240, बैलेंस शीट टैलीज एट 340. Ask a doubt. Whatever doubt you have, you can ask. Sir, if there is already balance in CRR before buyback, then after buyback, CRR should be created only for amount in excess of existing CRR. If you already have CRR, that has nothing to do with current buyback. That CRR is in respect of earlier buyback or earlier redemption of preference. अगर आप अभी बायबैक कर रहे हो, यू शुड क्रिएट अ सीआरआर फॉर करंट बायबैक. हेडलाइन लिखने का, हेडलाइंस. एंड आई होप यू पीपल राइट हेडलाइन एज अ हेडलाइन ओनली. इफ हेडलाइन कम्स एज अ बॉटम लाइन, यू विल बी रिटन ऑफ. क्या स्टिकी नोट ले रहे हैं? हेडलाइन लिखने का है. एग्जिस्टिंग सीआरआर बिफोर बायबैक ऑब्लिक रिडेम्पशन, existing CRR oblique, also before buyback oblique redemption, has nothing to do with, current buyback oblique redemption, has nothing to do with current buyback oblique redemption. बेसिकली हम क्या करते हैं, कैपिटल जो है उसको, बायबैक मीन्स व्हाट, कैपिटल कैंसिल करो और पैसा वापस करो. Whatever you are paying over and above the face value, that excess is debited to which account? CRR नहीं रहे. Whatever you are paid over and above the face value is debited to securities premium. You should try to use securities premium as much as possible. और डाउट पूछो. Sir, should we write PPE instead of fixed asset? Yes, you should write PPE instead of fixed asset. If you remember schedule 3, नाम चेंज किया उन्होंने. Plant, property and what? Equipment. और डाउट किसी को? होमवर्क हो गया ये? क्वेश्चन 1 डन. क्वेश्चन 2 ऑलरेडी डन था ना. ये होमवर्क्स भी आपके ऐप में अपलोडेड हो जाएंगे. अभी तक आप ग्रुप 2 के लेक्चर्स ऐप में नहीं आए ना अभी तक? आएंगे. P1 P2 P3 होमवर्क था ना. P3 भी इजी, सेम क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ना. P3 was exactly same as P1. I think P1 and P3 were same. इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेल किया है. तो P3 पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल का बायबैक किया तुमने, रिडेम्पशन किया. रिडेम्पशन मतलब क्या है? कैंसल कैपिटल एंड शो मनी पेएबल फर्स्ट. सुराना जी आपने होमवर्क नहीं किया? हाँ, चेक कर रहे हो? चेक कर दो. प्रेफरेंशियल कैपिटल 2000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2200. समझा गया? ये क्या किया हमने? पैसा पेएबल दिखाया. किसको पेएबल दिखाया? इन्वेस्टर्स को पेएबल दिखाया ना. देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 2200. हमने पेएबल दिखाया. प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम था, मतलब दे वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम.
Why you use securities premium? You should not use securities premium. Why? By default, you should assume prescribed company. By default, you should assume prescribed company. And if you assume it is a prescribed company, then you cannot use security premium. Headline. For redemption of preference shares, we should assume, and headline का पेज खत्म होगा तो अगले पेज पे जाने का. For redemption of preference shares, we should assume company to be prescribed company. For redemption of preference shares, we should assume company to be prescribed company. Hence, securities premium cannot be used for writing off premium on redemption. For writing off premium on redemption. जा गया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो राइट ऑफ करना है तुमको, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ नहीं कर सकते हो. इनटू ब्रैकेट रेफरेंस ग्रुप 1 आएंगे 2-3 दिन में. तुमको ग्रुप 1 के टेस्ट का शेड्यूल भी आएगा तुम्हारा. क्या बोली? तो ये कहां से जाएगा बच्चों? रेवेन्यू रिजर्व्स में से जाएगा. रेवेन्यू रिजर्व्स कितना रे? 200. अमाउंट करेक्ट लिखा उसने. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, वो करेक्ट है. सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ गलत. पूरा का पूरा सीआरआर 2000 के 2000 का सीआरआर किसमें से जाएगा? रेवेन्यू रिजर्व. सीआरआर फॉर सेक्शन 55. आज इसने बहुत हेडलाइन दिया हमने को. CRR cannot be created out of securities premium for redemption of preference shares, but it can be done for buyback. आप बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि बायबैक जो है वो बायबैक के सेक्शन के लिए, सेक्शन 68 के लिए फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000, देन बैंक अकाउंट डेबिट 2500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000. कैसे रहे? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 30 लाख था. दिस इज रुपीज इन 1000. यू कैन राइट कंप्लीट अमाउंट. 3000 is 30 lakh. Cost was 30 lakh, but it is sold at 25 lakh. तो 5 लाख का लॉस हुआ ना. बायबैक करना है. इक्विटी शेयर कैपिटल 600. कैसे? 3000 में से 20% बायबैक किया. रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 300. कैसे? 5 रुपया पर शेयर. 5 रुपीज पर शेयर ना. हाँ, यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आना चाहिए. है क्या बैलेंस उतना? लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम 300 टू इक्विटी शेयर होल्डर 900. इक्विटी शेयर होल्डर 900 टू बैंक अकाउंट 900 एंड रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट ना. गलत. यहां पर भी मैं क्या करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करूंगा. 200 का है ना. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200, रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 400 टू CRR. हाउ मच? 600. आई होप एवरीवन इज क्लियर. 600 वो तो सही था ना उसका. बैलेंस शीट शेयर कैपिटल देखो पहले. नोट्स अकाउंट्स 3000 था, उसमें से 600 बायबैक कर लिया. 2400. Sir, in yesterday Q3 we used the proceeds from issue of debentures for the purpose of buyback. I didn't get that. Mate pranam. We did not use debentures for the purpose of buyback.
ऋतुजा, अरे कल के Q3 में शी सेइंग वी यूज अ डिबेंचर्स. गुड मॉर्निंग ऋतुजा. ये देख Q3 में बायबैक was 22 lakh 50,000. Out of that face value was 12 lakh 50,000. 1250 प्रेफरेंशियस में से 250 गया एंड रिजर्व्स में से 10 lakh गया. शी इज सेइंग सर वी यूज कैश. Please understand, we have reserves, we have debentures. Cash gets mixed. You cannot identify which cash have you used. So, reserves and debentures, दोनों का कैश एक जगह पे आ गया. मैंने कल एक वर्ड यूज किया था ऋतुजा, you did not understood that word. The word was, we have created liquidity using debentures. But we have not used money of debentures. We had a huge reserves in Q3. I'll give you summary of headlines. Next, in this question, capital reserve 10 as it is. Anna. Revenue reserves 4,000 माइनस ना ये गलत जाएगा. ट्रांसफर टू सीआरआर. सीआरआर कितने का किया हमने रेवेन्यू रिजर्व्स में से? रेवेन्यू रिजर्व्स में से यहां पर 2000 का किया है पूरा और नीचे 400 का किया है. 2400 का सीआरआर किया ना रे. टोटल आउटर कॉलम में सेम आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 का था, फिर हमने 500 में से सीआरआर को ट्रांसफर कितना किया? 200 सीआरआर को गया और 300 हमने प्रीमियम राइट ऑफ किया. उसने एग्जैक्ट उल्टा लिखा है. रेवेन्यू रिजर्व्स, अच्छा प्रीमियम के लिए भी यूज किया है और रेवेन्यू रिजर्व्स कितना यूज किया है? अच्छा 200 भी यूज किया है. तो रेवेन्यू रिजर्व्स वी आर यूज्ड 2600. We are used 2600. Outer column 1400. Profit and loss account. Existing balance is 1800 minus loss is 1300 is right. CRR. Preference shares 2000 plus equity shares 600. 2600. ये प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं है. कैलकुलेटर 1400 plus 10 plus 1300 plus 2600 5310. उसका फाइनल टोटल करेक्ट आएगा 53. सिर्फ ब्रेकअप, उसने रेवेन्यू रिजर्व्स की जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम के जगह पे कम अप. बैलेंस शीट देखो, शेयर कैपिटल 2400, रिजर्व्स एंड सरप्लस 5310, डिबेंचर्स 400. कौन से? ये पहले ऑलरेडी है. करंट लायबिलिटी 40 ऑलरेडी है. 81 असेट साइड PPE should be the heading, plant property and equipment. You should have done the homework. 2750 non-current investment 2000. Do you understand non-current investment 2000? ये कौन सा है? 3000 था, सॉरी 5000 था. 5000 में से 3000 बेच दिया. करंट असेट्स 3400. कैसे? एग्जिस्टिंग करंट असेट्स जो होते हैं ना, उसमें से 4000 में से पहले हमने, अच्छा नीचे वर्किंग नोट लिखा है उसने, पहले सेल किया इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद पैसा बढ़ गया, 2500 ऐड हो गया, माइनस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2200 माइनस 900 फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. 3400 इज द क्लोजिंग बैलेंस. बैलेंस शीट टैलीज 81. shoot of the doubt. Yes.
लास्ट एंट्री में सीआरआर यूज करने के लिए पी एंड एल यूज कर सकते हैं क्या? मतलब यहां पर 400 का ना कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए। क्यों? लॉजिक बोलता हूं, 2 मिनट रुको। हिज डाउट इज इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स कैन यू यूज पी एंड एल फॉर creating CRR? You can, but I will not. Why? Let me explain. Please listen carefully on utilization of reserves. अंडरस्टैंड करो रिजर्व्स के नेचर क्या होते हैं। ऑब्जर्व व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। Reserves that appear in balance sheet. Sir, you explained yesterday. I want to explain again. You have a problem? उसके बाद भी उसको समझा नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। Reserves are of two types. From a conceptual point of view, reserves are capital reserves and reserves are revenue reserves. Revenue reserves means reserves which can be used for payment of dividend. Capital reserves means reserves which cannot be used for dividend. I hope you know this basic. Can't be used for dividend. Can be used for dividend. Now capital reserves को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। Securities premium and other. Others में क्या आएगा रे? Revaluation reserve, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व आएगा। कौन बोल रहे जनरल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व। सीआरआर, बाकी चीजें यहां पर आएगी। फॉर एग्जांपल लिखने दो, आरआर, सीआरआर, क्या हो गया? मूवी है। आरआर, सीआरआर, डीआरआर एक्सेट्रा। आरआर इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआर कैपिटल रिजर्व, ये अदर्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम, can't be used for redemption of preference shares, assuming company is prescribed. By default you are supposed to assume prescribed company. ये ग्रुप 1 अकाउंट्स के मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने लिखा है। Can be used for buyback for a writing of प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम मतलब अमाउंट अबाउ फेस वैल्यू। एंड बी क्रिएटिंग CRR, can be used for creating CRR, है ना? रेवेन्यू रिजर्व्स, general reserve or just the revenue reserve, you can say.
ये आरआर जो था वो रेवेन्यू रिजर्व नहीं था. दिस आरआर वाज रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L account balance. Both can be used for redemption of preferences and buyback. However, we prefer general reserve or revenue reserves over P&L. We prefer over general reserve over P&L. Logic. Section 123. P&L balance can be used easily for payment of dividend without complying rules. There were some rules, in case you remember law. Those rules do not apply to P&L balance. Those rules apply to reserves. Amount which is transferred to reserves. If you want to pay dividend out of that, then there are rules you might have forgotten. So that's why yesterday also I had told, you can use P&L balance but don't prefer. So what is your sequence choice? देखो हम समरी, इसका भी समरी लिख के देते हैं. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. सीक्वेंस क्या यूज होगा? पहले सबसे पहले प्रेफरेंस किसका होगा? प्रेफरेंस होगा जनरल रिजर्व्स, फिर जाएंगे हम P&L की तरफ. यहां पे सीक्वेंस लिखो. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस के लिए ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे. और बायबैक के लिए क्या सीक्वेंस आएगा? बायबैक के लिए मैं पहले यूज करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर होगा क्वेश्चन में तो. उसके बाद मैं यूज करूंगा जनरल रिजर्व, उसके बाद मैं यूज करूंगा P&L. अब बोलेंगे उसके बाद कर ही नहीं सकते. तो इतने में काम होना चाहिए. अंडरस्टूड भाई साहब? समझा क्या? कल क्या सो रहे थे? यूट्यूब पे देखा कल? सो डाउट क्लियर हो गया कौन सा रिजर्व कब यूज करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज रिस्ट्रिक्टेड है, तो आई विल ट्राई टू यूज इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. Sir, one silly doubt. Is it okay if the amount recorded in securities premium on issue of debentures is also used? Yes. Security premium is security premium. वो shares पे से आया या debentures में से आया, वो relevant. Logically, premium on debentures should not go to securities premium. But ICAI ने तुमको क्या सिखाया? Debentures का premium securities premium को transfer करने का. You are obedient student of ICAI. You have to follow the institute. So premium on debentures या premium on shares हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. Premium might be realized in cash. Premium might be for issue of or purchase of building, or a premium might be on for a non-cash consideration. That's okay. It doesn't make any difference.
Premium is premium. You can use securities premium. Anyone else has a doubt? Nobody has doubt? अब अच्छे यार. Question 3 हो गया ना? P1 डन, P2 डन, P3 डन, P4 मुझे सॉल्व करना है. Q1 कल ही सॉल्व किया था, हमने चेक किया था. Q2 सॉल्व किया था, Q3 हो गया था, Q4 होमवर्क था. Q4 बहुत इजी था क्या? P4 में क्या करना था? सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी थी स्टार्टिंग में. ये सब आंसर्स आपको अवेलेबल रहेंगे, अपलोड हो जाएंगे. हो गए, तुमको एक्सेस नहीं दिया है. सिर्फ पहले तुमने इन्वेस्टमेंट बेचा 30 लाख और 25 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 लाख. आई होप यू अंडरस्टूड. फिर प्रेफरेंसेस इशू किए, issued 12% preferences, entire amount being payable on application. Bank account debit 20 lakh to preference share capital 20 lakh. You should write to 12% preference share capital. Write the percentage. इतना जल्दी सुसु आ गया तेरे को? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख. अंडरस्टूड. फिर क्या करना है? बायबैक करना है ना. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख. कैसे? कितने शेयर्स? 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at 15. So 5 lakh into 5 extra. I will prefer to securities premium. 15 लाख ही अवेलेबल है क्या? लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 लाख. अच्छा, क्वेश्चन में दिया है रे वो. जनरल रिजर्व 10 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर 75 lakh. Amount shown payable. Equity shareholders to bank. And general reserve 30 lakh to CRR 30 lakh. 30 लाख कहां से लाया रे जनरल रिजर्व का? प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम किए क्या? हाँ, नहीं, हाँ, वेट इशूड किए. देखो, इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू कितना है? 50 लाख रुपया फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का. बायबैक किया, बट आउट ऑफ 50 लाख, 20 lakh is raised by issuing preference shares. कल ही मैंने हेडलाइन लिख के दिया था. CRR is created only for equity shares bought back out of reserves. Here, out of 50 lakh, 20 lakh is not from reserves. 20 lakh is from issue of preference shares. So CRR shall be of 30 lakh. बच्चों, और लिखा भी है क्वेश्चन में, फॉर दिस पर्पज. देखो एक वर्ड लिखा था उधर, फॉर दिस पर्पज दे इशूड प्रेफरेंस शेयर्स. So do you create a CRR equal to entire face value of equity shares bought back? No, you create a CRR only for equity shares bought back out of reserves. Headline कल भी लिखा था, वापस लिखने का. देखो, we create a CRR for equity shares bought back we create a CRR for equity shares bought back out of reserves. कुछ समझा क्या रे? है कोई माइकल जिसको डाउट है? एनी माइकल हु हैज अ डाउट? तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स लॉन्च हुए हैं. चैप्टर इज ओवर. नो, एक क्वेश्चन बाकी है क्या? कर लेते, सॉल्व कर लेते उसको. हाँ, अवॉर्ड नहीं, सॉल्व करेंगे.
Before we will solve. Immediately आज के आज क्या करना है तुमने? कॉन्सेप्ट बुक से रिवाइज करो. कॉन्सेप्ट बुक से इमीडिएटली रिवाइज करो. इमीडिएटली आईसीआई का मॉड्यूल ऑडिट करो. आईसीआई के मॉड्यूल में से जो सम्स दिए चेक कर लेना. और ये क्वेश्चंस जो दिए वो गो थ्रू करना. सॉल्व कर रहे हो, मतलब सॉल्व ना कि सॉल्व किए होगे तुमने, ऐसा अजम्पशन है. Whatever mistakes you have done, I hope you are rectified during checking. P4, last question. Then we start up with the new chapter, cash chapter. P Limited furnishes you following information: share capital, authorized capital. Am I concerned with authorized capital? No. ये authorized है ना शायद. Issued subscribe 2,50,000 equity shares of 100 each. Rupees in thousands दिया है. Sir, when will we receive books? When we courier, you'll receive it. As simple as that, na? So, doubt क्या है? Sir, is it okay if we account for payment of interest on preference shareholders? Vikrant Marathe. दो कान के नीचे खींचूंगा. You don't pay interest on preference shares. You pay dividend on preference shares. And we are not supposed to account because the question gives, we are passing entry only of that day. We are not passing entries for 1 year. So, entry एक दिन का पास कर रहे हैं ना. और on preference shares you have dividend, you don't have interest. Preference shares. Wow, beauty. Issued 2 months back for the purpose of buyback. Concept क्या है? जो CRR क्रिएट होगा ना, वो ये 200 माइनस करके होगा. These preference shares are already issued. For what purpose? Rutuja, listen carefully. You can issue debentures to create a liquidity, but you cannot say that we are using debentures for a buyback. कल का जो क्वेश्चन था Q3, उसमें डिबेंचर्स भी इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए थे. मैंने क्या किया था याद है क्या? While solving yesterday's question, Q3 जब मैंने सॉल्व किया था, इधर गया Q3. ये क्या है? ये सन टीवी चालू हो गया लग रहा है. हाँ, Q3. इन Q3 मैंने बोला था फेस वैल्यू paid out of preferences and out of reserves. So reserves were not available in liquid form. That's why we created a liquidity by issuing debentures. I did not use debentures for buyback. Headline. Headline. जाले इधर है तेरा होमवर्क आज का, सब हेडलाइन टाइप करके देने का मेरे को. सब लिखे तूने? हेडलाइंस, फंडाज, जो भी दिया मैंने, सब टाइप करके मेरे को 6 बजे के अंदर अंदर चाहिए. लेक्चर खत्म होने के बाद इधर तेरे असिस्टेंट लोग, तेरे जो भी है, उनको सब लेके बैठने का. लिखो. हाँ, इतने सारे असिस्टेंट है तेरे को. लिखो, हेडलाइन लिखो. We cannot use amount received. We cannot use amount received from issue of debentures towards buyback. However, debentures can be used to create a liquidity
Debentures can be used to create liquidity if reserves are not represented by cash. If reserves are not represented by cash, मतलब तुम्हारे पास रिजर्व्स है लेकिन वो रिजर्व्स कैश के फॉर्म में नहीं है, तो क्या कर सकते हो तुम? डिबेंचर्स इशू कर सकते हो ना, इनटू ब्रैकेट रेफरेंस Q3, नॉट Audi Q3, जस्ट द Q3. कुछ लोगों को समझा ही नहीं. सो क्या गया? रेफरेंस Q3, कम बैक. सो इस क्वेश्चन में जो प्रेफरेंसेस तुमने इशू किए हैं वो कब इशू किए थे? 2 महीने पहले. किस चीज के लिए इशू किए थे? बायबैक के लिए. रिजर्व सरप्लस ब्ला ब्ला ब्ला, फिक्स एसेट सो एंड सो. कंपनी पास ए रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट 50 पर शेयर. फेस वैल्यू कितने दी? 10. तो ऊपर का 40 क्या है? प्रीमियम ऑन बायबैक. For this purpose, company sold all investment for 22 lakh. Pass entries and make a balance sheet. करेंगे. Let us start. Good question it is. Expensive jokes. Jokes are not expensive. Your brain is poor. P4. Journal entries. Are we going to have any date or anything like that? Date, particulars, rupees, or particulars debit, credit. Do we have redemption of preferences in this question? No. Are we supposed to pass an entry for issue of preferences? No, that is already passed. The preferences balance sheet में है, मतलब entry already pass हो चुकी. आपको सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है? रिडेम्पशन, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. बायबैक करना है मतलब क्या? पहले कैपिटल कैंसिल करो. चल जा. इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स बायबैक करने हैं रे तुमको? टोटल 20% करना है. 2500 into 20%. Rupees in thousands at the top. 500. ये 500 क्या है? फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू मैंने कैंसिल किया. फिर प्रीमियम ऑन बायबैक डायरेक्टली डेबिट करो. कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे? प्रीमियम ऑन बायबैक. आई विल ट्राई टू यूज बायबैक का सीक्वेंस. समझाना रे? सीक्वेंस लिख के दिया था मैंने अभी. सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट. कितना परसेंट? नहीं, कितने शेयर्स बायबैक किए तुमने? 2,50,000 का 20%. 50,000 शेयर्स इंटू ₹40 डिवाइडेड बाय 1000. रुपीज इन 1000 करने के लिए 40 रुपया प्रीमियम है ना. 2000 आता है ना? है क्या 2000 अवेलेबल? हाँ है, अवेलेबल है. बराबर क्या अवेलेबल है? समझा क्या इनको? डिवाइडेड बाय 1000 समझा है ना? टू equity shareholders, please understand, and you don't understand anything, shoot up the doubt. How sir useless it could be? You may be roasted after the doubt, but that's okay. Narration लिखो. Being amount shown payable to equity shareholders on account of buyback. Being amount shown payable to equity shareholders on account of buyback. Have you understood? अमाउंट शोन पेएबल, प्रीमियम राइट ऑफ कर लिया हमने. अब क्या करेंगे? पे करेंगे.
इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, लिखे करेंगे एंट्री उसका भी। इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट कितना रे? 2500। 2500। आर यू क्लियर? Being amount paid. Being amount paid. To equity shareholders लिखो ना for buyback. कुछ नहीं आ रहा तो नरेशन लिखते जाओ। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया ना, कितने को बेच दिया? 22 लाख। 22 लाख मतलब 2200। उसका कॉस्ट कितना था? बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में 3000 कॉस्ट था उनका, लॉस कितना है? P&L अकाउंट डेबिट 800 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाउ मच? 3000। You will be having MCQs also on each of the chapters, because in case you fail and in case new syllabus comes, you'll have MCQ in every subject. So we are preparing you for new syllabus also. I hope you don't want to go to new syllabus, at least in Inter. You want to go? That includes failing in November 22, maybe May 23. You wish. Being investment sold. So, being investment sold. Next, CRR create करेंगे. Now look at this. Face value of equity shares bought back is 500. I will not create CRR of 500. You out of 500, something is raised by issuing preference shares. How much is raised by issuing preference shares? 200. Balance कितना है? 300 है. So I will create a CRR of 300 only. है ना? I will create CRR out of securities premium. अवेलेबल है थोड़ा बहुत. Securities premium कितना है बैलेंस शीट में? 2200, out of which 2000 we already used for premium. Balance is 200. I will use 200. और फिर हम जाएंगे P&L को नहीं जाएंगे. ए ससुरे, we will not use P&L. We'll use what? Revenue reserves. Revenue reserve. How much? 100. Anna. To what? To CRR account. Being CRR created for equity shares bought back out of reserves. Being CRR created for equity shares bought back out of reserves. Any Michael has a doubt? Any entry pending? Shall we start with the balance sheet? Yes. Last balance sheet for this chapter. मस्त चैप्टर था कि नहीं? अब देखो, सिर्फ एंट्रीज पास किए होते तो तुमको क्या समझा होता चैप्टर के अंदर? कुछ भी नहीं. सन टीवी का एग्जांपल लेके आपको समझा होगा बायबैक क्यों करते हैं, बायबैक से इंप्रूवमेंट कैसे होता है. चलो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर. अभी तो कौन कॉल सुना होगा तुम लोगों ने? अमाउंट रुपीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. हेडिंग है ये.
ये मेरा फॉर्मेट नहीं है। सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स, इनसाइड दैट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में से कितना कह रहे? 500 गया ना टोटल, तो आई नो 2200 रहेगा आउटर कॉलम। कैसे? प्रेफरेंस शेयर्स एज इट इज है, इक्विटी शेयर्स में से 500 चला गया ना, पी रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर बनाएंगे। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है ही नहीं। शेयर कैपिटल के लिए मेरे को नोट नहीं बनाने का, तुमको बनाने का बनाओ। $3,600, सॉरी नहीं आएगा, पेंडिंग है। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, वी कैनॉट टेक अ टोटल। नॉन करंट असेट, inside that what will have? PPE, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। एक्चुअली टैंजिबल लिखना चाहिए पहले, टैंजिबल के अंदर पीपी आता है। ठीक है चलो, 9,300, देयर इज नो चेंज इन दैट। इन्वेस्टमेंट्स सबके सब गायब हो गया। करंट असेट्स, करंट असेट्स कितने हैं तुम्हारे? पहले 1500 थे, 1500 में से हमने पे कितने किए रे? रिडेम्पशन के लिए पे कितने किए? 2,500 प्लस 2,200 बेच के आया पैसा, इन्वेस्टमेंट बेच के आया ना पैसा। 2,500 paid and 2,200 you received from sale of investment. Answer? 1,000. That's it. Total 10,000 ऊपर भी आ जाएगा। कैसे? नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस। Reserves and surplus. Shall we start? Capital reserve. Capital reserve, how much? 1,000. Revenue reserve. Now उसमें से हमने कुछ तो यूज किया था ना, 100 यूज किया था, 2,000 security premium we use entirely. P&L 3,500 माइनस लॉस हुआ था 500 का ना, 500 का लॉस हुआ था ना, 800 का लॉस हुआ था, ओके, माइनस 800 इज इक्वल टू 2,700। CRR, how much CRR we created? 300, total 6,000 और कुछ है क्या? Take it up, 6,900, total should be 10,500। खाली हो गया क्या? Do you wanna go mad? Let me explain. Do not write. हो गया, आंसर हो गया। Let me make you mad. I'm just writing in a green color figures that were prior to this, prior to buyback. There was 2,700. There was 9,700. Am I right? There was this 1,400. And balance sheet was tallying at 13,000. This figure was same. There was one more figure, investments of 3,000, which are now 0.
Balance sheet was 13,800. What did we do for a buyback? How much amount we paid? 50 rupees per share on 50,000 shares. That is 2,500. Common sense लगाओ. बैलेंस शीट का टोटल परफेक्ट 2500 से कम हुआ है. चेक करो. 13,800 माइनस 2500. 2500 से टोटल कम हुआ है यार. 13,800 माइनस 2500 करो. अच्छा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बेचा है हमने. इन्वेस्टमेंट कितना बेचा है हमने? 3,000 का बेचा है, बट उसकी जगह पे बैंक बैलेंस आया ना. कितने का बैंक बैलेंस है? 2,200 का. 800 का लॉस हुआ ना. देखो कैलकुलेटर. 13,800 माइनस लॉस ऑफ 800 माइनस 2,500 का बायबैक. दैट शुड बी 10,000. इज माई कैपिटल इंटैक्ट? यस. हाउ? Capital has come down by 500, but there is a CRR of capital has come down by 500, right? But there is a CRR of 300. अब बोलेंगे सर, ओ सर सिर्फ 300. देखिए रुक, there is a preference shares. Preference shares are issued for 200 ना. See, actually before buyback, capital was not 2,700. Capital was Before buyback, capital was 2,500 only. 2500 का ही कैपिटल था. ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर बायबैक ना. 2500 का कैपिटल था. 2500 से कितने पे आया? 2,200 पे आया. मतलब 300 से कैपिटल कम हुआ. 300 से कैपिटल कम हुआ मतलब सीआरआर कितने का किया हमने? 300 का. तो हियर बायबैक इज फाइनेंस्ड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स. Buyback is financed by issuing preference shares partly. That's why we created a CRR of a lesser amount. If anybody has any doubt on this chapter, please ask. Chapter is over. So which questions you should include for your revision? Class book के अंदर आपको यहाँ पर जगह दिया है. आपने immediately index fill up करना चाहिए. Which question should be included for revision? Q3 तो yes ही था. Q6 भी अच्छा था मेरे हिसाब से. कल हमने सॉल्व किया था. Q6 में क्या कंसेप्ट था रे? हाँ, उसमें CRR यूज किया था. प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन था उसमें. Q3 Q6 आपके रिवीजन में आना ही चाहिए. फिर मई 22 का एक हमने एडिशनल सॉल्व किया था. Q7 उसको लिखो. मई 22 एग्जाम. वो हमने बुक में प्रिंटेड नहीं है, वो भी आपके रिवीजन में आना चाहिए क्योंकि उसमें लिमिट्स थे सब. आपको याद होगा तो. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स दैट वी डिड. और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में मतलब और कुछ लग नहीं रहा है. और कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को जो जिसमें कुछ तूफानी कंसेप्ट है. ये Q3 Q6 में सब कुछ कवर हो रहा है. P4 ठीक है, एक इंक्लूड करो. हाउ मेनी क्वेश्चंस आपको चैप्टर रिवाइज करना है? ये P4 Q3 Q6 मई 22 मतलब जो मैंने सॉल्व किया वो चारों के चारों क्वेश्चंस आपने रिवीजन के लिए इंक्लूड करना चाहिए. नोटबुक का पेज नंबर आपने यहां पे लिखना चाहिए. नोटबुक का नंबरिंग करना चाहिए. दर्द होता है ना नंबरिंग करने को. टीडीएस रहता है. सर कैन यू शेयर द कंसेप्ट बुक ऑफ दिस चैप्टर? आइला क्लास बुक शेयर किया ना. आई शेयर द कंसेप्ट बुक. सो आज के आज सोने के पहले. हिंदी इज वेरी टफ यार. Before you go to the bed, you must revise this particular chapter. Buyback आपका रिवाइज होना ही चाहिए. ये बायबैक का चैप्टर आपके ग्रुप पे टेलीग्राम पे आ गया होगा. आई होप एवरीवन इज देयर ऑन द टेलीग्राम. सो
सन टीवी देखने का, फिर एंट्रीज समझने का। एंट्रीज, ओके बाय द वे मैंने एंट्री सिखाया नहीं ना तुमको। कंसेप्ट बुक अगर देखोगे, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है, मेथड्स ऑफ बायबैक लिखा है, लीगल प्रोविजंस पूरे लिखे हैं। मैंने लीगल प्रोविजंस पूरे नहीं सिखाए क्योंकि लॉ में कवर्ड थे। आई जस्ट गिवन हियर फॉर अ रेफरेंस, यू शुड रीड इट क्योंकि लॉ में भी आपको फायदा होगा ये। फिर यू शुड क्रिएट अ सीआरआर, कैरेक्टर टेस्ट था। फिर सेबी के रेगुलेशन सिखाए थे मैंने, एक एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल भी हमने किया था, हाँ ना। फिर इनकम टैक्स एस्पेक्ट्स ऑफ बायबैक, यू मे नॉट रीड दिस, ये छोड़ दो। एंट्रीज फॉर बायबैक देखो मैंने क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो रेफरेंस में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम पहले लिखा है, फिर मैंने जनरल रिजर्व लिखा है, और उसके बाद भी अगर तुमको लिखना ही है पी एंड एल अकाउंट उसके बाद, टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, instead of equity shareholders I had written equity share buyback, and then equity share buyback to bank, and then general reserve to CRR. Can you create a CRR out of security premium? Yes. पहले इंस्टीट्यूट नहीं करती थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, you should create that. वहां पर क्या लिखना चाहिए तुमने, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना चाहिए। CRR is created on amount other than this, other than amount redeemed from issuing preference shares. रियल लाइफ में डिस्क्लोजर्स करने होते हैं बायबैक के, मैंने आपको जो दिखाया था उसके वेबसाइट पे, जाइडस वेलनेस के, जाइडस लाइफ साइंसेस के वेबसाइट पे, यू टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, यू टू मेक अ डिस्क्लोजर्स। तो मैंने उसका एक कोई लिंक दिया है, आई डोंट नो वेदर आई हैव दिस लिंक, गूगल लिंक्स में नॉट बी वर्किंग नाउ, ये लिंक नहीं चलेगा, ट्राई कर देखो, नहीं चलेगा। दिस वाज गूगल शॉर्टनर, नाउ दे हैव डिसकंटिन्यूड दैट सर्विस। तो इफ यू वांट अ रियल लाइफ डिस्क्लोजर, व्हाट यू कैन डू इज, देखो ये बायबैक के जो कैलकुलेशंस होता है ये आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करने होते हैं, वन इंग्लिश एंड वन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। सो आई से जाइडस इन्वेस्टर रिलेशंस, कोई भी कंपनी का देख सकते हैं आप। तो जाइडस लाइफ साइंसेस का वेबसाइट देखता हूं, जाइडस लाइफ, ऊपर जाइडस वेलनेस था। आई एक्सेप्ट द कुकीज, इन्वेस्टर जोन में लुक एट दिस, बायबैक, पब्लिक अनाउंसमेंट, न्यूज़पेपर कटिंग। तो न्यूज़पेपर में आपको कैलकुलेशंस दिखाने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर ही में या पूरे इसके अंदर। अभी इसने भी क्या घटिया तरीके से, कोई पढ़ ही नहीं सकता उसको, क्लियर ही नहीं है ना, ऑब्वियसली ना, ये ऊपर का क्लियर ही नहीं है, कोई तो पेपर में दिया है उसने, ये कोई तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का ही है, गुजराती लैंग्वेज है कोई तो, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस इन गुजराती आई थिंक, जनसत्ता हिंदी में दिया है, याद है ना, वो अपना लॉ में था वर्नाकुलर लैंग्वेज, अगर इंग्लिश वाला पढ़ते हम पहले, ये देखो इंग्लिश, लुक एट दिस, जो मैंने सिखाया होगा सब कुछ आएगा इधर। उन्होंने बायबैक क्यों किया, डिटेल्स ऑफ द बायबैक, हाँ यहां पर मैं रैशनल दिखाता हूं, यू हैव टू एक्सप्लेन रैशनल बिहाइंड द बायबैक। रैशनल मतलब व्हाट इज द रीजन। बायबैक विल नॉट रिजल्ट इनटू एनी बेनिफिट फॉर द प्रमोटर। क्यों, अगर आपको याद होगा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ रहा था जाइडस के केस में, बिकॉज प्रमोटर वाज ऑलरेडी ओनिंग द शेयर्स इक्वल टू व्हाट, 74%। नेसेसिटी फॉर बायबैक, देखो why they are doing a buyback, the necessity for buyback, the buyback is capital allocation decision by company. The buyback will help the company to distribute part of surplus cash to shareholders holding equity shares, thereby optimizing return to shareholders। याद करो मैंने ROE कैसे बढ़ता है एक्सप्लेन किया था,
and enhancing overall shareholders value in longer term and improving return on equity. याद है क्या पहला लेक्चर जो बर्बाद किया था मंडे का? ए चमान कॉन्सेंट्रेट यार, यूजलेस स्ट्रेट। तो बायबैक का उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पर। मैक्सिमम प्राइस फॉर बायबैक कितना होगा? 650 में बायबैक करने वाले हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट कंपनी प्रपोजेस टू बायबैक, ठीक है। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है बायबैक के पहले और बायबैक के बाद, ये डिस्क्लोजर सबको करने होते हैं। देन कैलकुलेशंस भी दिखा दो तुमको। ये शेयर होल्डर्स का परसेंटेज है, ईच शेयर होल्डर का परसेंटेज क्या है वो दिखाना पड़ता है तुमको। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर का सर्टिफिकेट। इट्स सच ए यूजलेस बुलशिट लॉ द whosoever has written. Why the hell do you need these disclosures in a newspaper? You can say put it on a website, send it to all the shareholders. जाने दो। कैलकुलेशंस दिखा दो तुमको। हाँ ये देखो, ये कैलकुलेशंस है, देखो। अनेक्शर ए, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट परमिसिबल फॉर कैपिटल payment towards buyback of equity shares of Zydus Life Sciences as per section 68(2)(c) of the act based on audited financial statements of 31st March 2022। वही लेटेस्ट अवेलेबल स्टेटमेंट्स वही है ना। देखो उन्होंने वर्किंग दिया है यहाँ पर। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड प्री रिजर्व्स लिया, याद करो। पेड अप इक्विटी कैपिटल रिसोर्सेस टेस्ट कर दो। रिटेन अर्निंग सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं उनके पास। जनरल रिजर्व, टोटल फ्री रिजर्व, टोटल ऑफ देम आ गया। देखो C इंटू 25% एंड C इंटू 10% इफ यू आर गोइंग फॉर अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कैलकुलेट किए यहाँ पर। मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल ये अमाउंट है, फिर उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने वर्कआउट किया। डेट इक्विटी रेशियो के लिए उनके पास डेट ही नहीं शायद, तो ये सर्टिफिकेट दिया एंड देन you are gone ahead with the buyback. So you have shown the calculations and the buyback is within the limits. अरे समझा क्या तुम? ये सब डिस्क्लोजर सबको करने पड़ते हैं। ये क्या है? ये जनसत्ता करके दूसरा पेपर है, उसमें भी उनको पब्लिश करना पड़ा। सेम एडवर्टीजमेंट वहां पे दिया है। इट्स नॉनसेंस इन माय ओपिनियन। कोई पढ़ता भी नहीं होगा ये फॉन्ट में। तुमको लगता है न्यूज़पेपर में कोई पढ़ेगा? व्हाई? दिस इज व्हाट हैपेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द IAS लॉबी। और जब लॉ लिखते हो तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यार। ब्रिटिशर्स के जमाने ये क्या हुआ है ना, जब ब्रिटिशर्स का जमाना था, जब लॉ शुरुआत में लिखा होगा, तब ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट मैंडेटरी था, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नाम की कंसेप्ट नहीं थी, ईमेल नाम का कंसेप्ट नहीं था। आज शेयर होल्डर्स का आपका हर एक शेयर होल्डर का ईमेल आईडी आपके पास है, तो भेजो ना उसको ईमेल पे, आराम से भेजे। तो ये ऐसे फॉन्ट में करते क्यों है? क्योंकि वो पेपर में साइज ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए वो ऐसा घटिया तरीके से प्रिंट करते हैं लोग। जाने दो, ये डिस्क्लोजर्स है। तो फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, बायबैक डू क्रिएट अ वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। इट्स बेसिकली क्या है? चर्बी कम करने का कंसेप्ट है। एक्सेस कैश जो तुम्हारे पास पड़ा है, एक्सेस प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास पड़ी हुई है, उसको क्या करो आप? डिस्ट्रीब्यूट कर लो शेयर होल्डर्स के बीच में। समझा मुद्दा जी? एक्सेस कैश जो है वो हम शेयर होल्डर्स को वापस कर रहे हैं। Anyone has a doubt on the chapter before I go to the new chapter? Nobody has doubt? The chapter ends.